जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक कुमार एक ऑफिशियल चैनल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी किस तरह जाने जाते हैं सारी दुनिया में अपने आप को बेबाकी के साथ अपने बात को रखने के लिए। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पहले ही हमारे देश के इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएनजीए में स्नेहा दुबे, वो पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिए हैं कि जो पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से हमारे कश्मीर को जो कब्जाए हुए हैं उसे जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाया है आतंकियों के को लेके, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं किस तरह हमारे जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में पाकिस्तान को किस तरह धो दिए हैं। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें ताकि हम ये भी आपको समझा सके कि यूएन क्या है और इसके क्या महत्व है। While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. Mr. President, unlike Pakistan, India is a pluralistic democracy with a substantial population of minorities who have gone on to hold highest offices in the country, including as President, Prime Minister, Chief Justices, and Chiefs of Army Staff. India is also
a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our constitution. Pluralism is a concept which is very difficult to understand for Pakistan, which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state. The least they could do is introspect before exposing themselves to ridicule on the world stage. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President. जैसा कि हम सभी ने देखा कि किस तरह स्नेहा दुबे जो है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव डिप्लोमैट, वो किस तरह पाकिस्तान को धो दिए हैं आतंकवादी को लेके, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, और यूएन को ये याद दिलाते हुए कि जो 9/11 का टेरर अटैक जो हुआ था और उसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में जो पनाह लिए थे, तो किस तरह हमारे जो डिप्लोमैट है वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, और ये भी बैठ के कहाँ से, न्यूयॉर्क में यूएनजीए में, यूनाइटेड जनरल असेंबली से। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये यूएन है क्या। यूएन एक तरह से ये समझ लीजिए कि असेंबली है, सांसद है, जो सारी देश से कहीं ऊपर है। उसके सदस्य लगभग 193 कंट्री है जिसका ये सांसद है, और अंतर्राष्ट्रीय फोरम ये है जहां से हर देश, और यूएन वो फोरम है जहां से ये सुनिश्चित किया जाता है कि देश को किस तरह आतंकियों से बचाया जाए, किस तरह मानवता का नुकसान ना हो, और किस तरह तरक्की के रास्ते पे चला जाए। तो ये संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी और अभी तक ये काम चल रही है, और इसमें 193 देश शामिल है, और ये जो सांसद है 193 देशों पे लागू होती है। तो वहाँ से हमारे जो स्नेहा दुबे है, भारत के डिप्लोमैट, वो जाके वहाँ से पाकिस्तान को अमेरिका से सीधी अल्टीमेटम का है या वार्निंग का है जवाब दे दिया है कि जो पाकिस्तान गैरकानूनी तरीके से हमारे कश्मीर को जो कब्जाए हुए उसे खाली कर दे। यूएन में पाकिस्तान के वो सारे कुकर्म जो करते आ रहे हैं मानव अधिकार के खिलाफ, वो सारे वहाँ कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है यूएन में कि किस तरह पाकिस्तान में माइनॉरिटी को क्या किया जाता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट को किस तरह पनाह दिया जाता है और किस तरह उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके किस तरह परेशान हम हिंदुस्तानी हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है, ये पूरी दुनिया के लिए समस्या है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक